On behalf of Indian Direct Selling Association, I, Chetan Bhardwaj, welcome you all to the virtual release of annual survey for the financial year 2020-2021 for direct selling in India. On behalf of IDSA and all our member companies, I express our sincere gratitude to all the viewers who are currently watching us live on IDSA's social media pages as well as who are currently logged into the platform developed for the event. The annual survey exercise is undertaken every year by IDSA to analyze the performance of the industry in the year gone by. IDSA's annual survey is the only authentic source of information that provides key facts and figures related to the performance of the industry. Needless to mention, the results are followed not just by stakeholders in India, but from different governments and associations from around the world. The journey of Indian Direct Selling Association is as old as the direct selling industry in India. A journey that started 25 years ago with a handful of members has now reached to a point where IDSA is proud to have member companies representing the majority share of the Indian direct selling industry. As an association, IDSA strives to create an environment that is conducive for the growth of direct selling industry in India. And we do so by partnering with industry and government alike. IDSA catalyzes change by partnering with government on all policy-related issues. IDSA is also pledged to work towards ushering clarity in the direct selling business as well as bringing more confidence among the millions of people currently associated with it. The year 2020-2021 is of particular significance, not just to the direct selling industry, but to the overall Indian economy in general. A year which was marked by the spread of COVID-19 pandemic followed by government-mandated lockdowns presented a never-seen-before scenario before the industry. While, on one hand, businesses across the spectrum struggled to maintain their growth momentum, I'm proud to say direct selling emerged as one industry that has sailed against the tide. The robust distribution system developed by our direct selling entities over the last several years greatly helped them in delivering the products directly to the customer's doorstep, thereby attracting many new consumers to the industry. While, as an industry body, we are confident of the exceptional performance of the direct selling industry, a hint of which was given in the IDSA's biannual survey released earlier this year. However, today's survey result will tell us how far we have gone in terms of fulfilling our bid towards the fulfillment of the vision of New India of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. So without wasting any time, let us proceed with the event of the day. Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhan Sampada Shatru Buddhi Vinashaya Deepak Jyoti Namastute. Salutations to the light of the lamp which brings auspiciousness, health and prosperity. With these words, I once again welcome you all to this virtual annual survey release event, and let's start the day's proceeding by virtual lamp lighting. I would now like to invite Shri Rajat Banerjee, Chairman of the Indian Direct Selling Association, for the welcome address. As the head of IDSA, Mr. Rajat Banerjee has been proactively leading all our initiatives from the front, and under his supervision, IDSA is scaling new heights. Over to you, sir. Thank you for that introduction, Chetan. A very good morning to everybody and welcome you all to the annual survey 2020-2021 by the Indian Direct Selling Association. As the name would suggest, this is an annual exercise which we have been doing for over 20 years. And the annual survey remains a touch point for data on this industry, for policymakers, for media, for industry houses, and the public at large. Before we go any further, a message to all the public members from the Indian Direct Selling Association. We trust you are all keeping in good health during these pandemic times, which have been very challenging for not just us, but for the entire world, for the entire globe for that matter. We are privileged today to invite Sri Ashwini Chowbeji, Minister of State for Consumer Affairs, to bless this occasion and help us
take this industry forward, because this industry touches vast number of consumers, and as the data points will show us later on, there are virtually millions of people involved in this industry, millions of consumers involved in this industry. As I did touch upon the pandemic, it touched everybody on the personal front, on the professional front, economies globally, economies in the country, and of course the direct selling industry as well. But as everything else, the direct selling industry in India seems to have come out stronger. The industry has moved into a high touch, into a high tech position where a lot of companies have moved their operations from the shop floor to online. Direct sellers indeed do not have to go to the stores of the companies. They can order from the comfort of their homes, and the products are delivered either to them in their homes or to their consumers directly. The logical step for this, of course, means that the home deliveries of this industry have again leapfrogged and have become very, very cutting edge and modern in that sense. And of course, another direct impact of the pandemic is the numbers of people that have shown interest in the direct selling industry in India. We actually feel very proud that this industry provides livelihoods to close to 8 million Indians, almost 80 lakh Indians. That's a huge number. And we are glad that during the pandemic, at least, this industry provided livelihood opportunities, income opportunities to a larger number of people. As would be evident from the figures that will be shown by IDSA, our partners, the numbers of men now seem to be increasing and have gone way beyond that of women. While at one point, women were contributing about 70% of the people involved in this industry. Today, the male contribution is around 53%, which means that the numbers of men take to this industry are larger than before. We have lived through momentous times, and I don't mean to exaggerate at all. Why do I say so? Well, this journey started sometime in 2016 when the guidelines were released by the central government. Thereafter, the industry carried on working with policymakers, with decision makers, with ministers, etc. And in 2019, the Consumer Protection Act mentioned direct selling for the very first time. The Consumer Protection Act also gave powers to the government, in our context, the Ministry of Consumer Affairs, to make rules for this industry. Most of you would know this is exactly what we have been seeking from the policymakers, from the government of the day, which is regulatory clarity so that this industry could thrive. After the guidelines were released or issued in 2016, this industry saw a surge of interest. Turnovers went up, the number of people coming in went up, and now we are at another takeoff point. Basis the Consumer Protection Act 2019, the central government has recently issued the Consumer Protection Direct Selling Rules 2021. This rules puts a lot of onus on the industry itself to ensure that direct sellers, the direct selling industries, ensure that the consumers' protection, consumers' rights are protected, and that there is absolute clarity while we are working. What does this mean going forward? This means that the direct seller out there in the field, the direct selling entity servicing them, as well as everyone involved, has to step up their responsibility from the consumer's perspective. It also means that now the states play a larger role, because while the rules have been notified by the center, the implementation of the rules will be at the state level. This also could mean that associations like us get directly involved and partner the state governments in terms of how to deal with this new industry, a capacity building. Perhaps we'll have a space to get involved there. Another positive step on the policy front is that we see that the national retail policy, which is being drafted right now,
and we've seen from the earlier trials, also does find mention of direct selling. To sum up, I think it would be fair to say that this industry is at another takeoff point. We have the clarity, we have the backing of the ministry, we have everything set in place for us. Companies are poised to better service the consumers. Direct sellers rather, have clarity on what their roles and responsibilities are. And as I've said, the onus is on the industry, this entire industry, to ensure that the rights of the consumers are protected going forward. With these words, I hand back to my Jacob. Thank you. There could not have been a better start to the day's proceeding. Thank you so much, sir, for those positive and inspirational words. I'm sure your address will boost the morale of the millions of direct sellers who are eagerly looking forward to make a successful career for themselves in the direct selling industry. Ladies and gentlemen, the moment we all have been waiting for is finally here. I would request all our dignitaries to virtually unveil the results of the annual survey 2020-2021 for direct selling industry in India. Thank you, honorable dignitaries, for releasing the annual survey report. Time now to welcome IDSA's research partner, Ipsos Strategy 3, to make a presentation on the key survey findings for the financial year 2020-2021. And for this, I would like to extend an invite to Shri Deepak Hanumantharatta, partner and country head Ipsos Strategy 3, for taking us through the key highlights. Over to you, Deepak. Hello, everyone. My name is Deepak. I head the Strategy 3 practice for Ipsos in India. I would like to thank the Executive Committee of IDSA for partnering with Ipsos for the second consecutive year. I would also like to thank Shri Ashwini Kumar Chaube, the Honorable Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution. I would also like to thank you all for taking out time and listening to us. I would like to spend the next few minutes to walk you all through the key findings of the report titled State of the Direct Selling Business in India 2020-2021. Based on the data that we've gathered from over 200 companies, we are estimating the FY21 size of the direct selling industry in India to be pegged at about 18,000 crores, which is grown by about 7.7% compared to FY20. This is despite the COVID challenges on the ground. The industry has continued to perform well. While it is lower than the last few years CAGR, so when we look at the CAGR of FY17 to 21, the industry had grown at 12% CAGR. The key segments which have driven the growth is largely been from the wellness and nutraceutical category, followed by cosmetics and personal care. Some of the two account to about 80% of the total direct selling business. One of the notable trends was also the fact that with the impact of COVID, both the wellness and nutraceutical category did see a slightly better offtake compared to the previous period. When we look at the regional mix, while at an overall level, we see the mix to be more or less similar to what it was in the previous period, which is FY20. North continues to be the largest region from a direct selling industry standpoint, accounting to about 29%, wherein UP specifically has been leading in terms of the states in the northern region, followed by Haryana and Delhi.
East was the second largest region, accounting to 26%, driven primarily by West Bengal, which accounts to 11% of the total revenue of direct selling industry. That followed by Bihar and Odisha having major contributions in the eastern region share, followed by West, which accounts to about 23%, which was largely dominated by Maharashtra, which at an overall level accounts to about 12%, followed by Gujarat, being the key states in the West contribution. Then South, even similar to the last year, accounts to about 14% of the total direct selling business in India. The key state figuring in South is Karnataka, accounting about 6% of the total sales, while there are other states, but they don't fall in the top 10 state category. Then finally, Northeast accounts to about 8%, primarily because of the contribution of Assam in the overall piece. So when you look at the top 10 states, there are 3 states which have accounted to more than 10% of the total state, which is Maharashtra, West Bengal, UP, which continue to be at the forefront of growth from a direct selling industry standpoint. In aggregate, the top 10 states account to about 70% of the total size of the industry in FY21, as compared to 69% in FY20. We also continue to notice the increase in number of direct sellers, even in FY21. So today we estimate the total number of direct sellers to be about 79 lakh in the country. It is interesting to note that what used to be female dominated in FY17 today has got a higher skew of male direct sellers. Today, about 53% of the direct sellers are estimated to be male, which is also a post-COVID impact to that effect. So we're likely to see this trend to be at around similar levels as we go forward into the future, or it can slightly vary depending upon how the job scenario on the ground spans out. But what is likely to remain as a trend in our view is the number of direct sellers going up as the industry continues to grow, because we also estimate the Indian direct selling industry to hit about 50,000 crores by 2030. Now, with that, I would like to thank you all for listening to me. And if there are any specific questions that you all have after going through the detailed report, you all can reach out to us. So thank you very much. Thank you, Deepak, for that insightful presentation. The survey findings have once again reinforced our belief that in the years to come, direct selling industry shall emerge as the true torchbearer of the socio-economic growth of the nation. The growth registered by the industry, particularly during a time which was dominated by economic lockdowns, is a testimony of the fact that we are moving on the right track and the industry is increasing its footprint in the Indian market. May I now request our Honorable Chief Guest, Shri Ashwini Kumar Chaubeji, Minister of State for Consumer Affairs, Food and Civil Supplies, Government of India, to deliver the keynote address. Over to you, sir. आज हमारे मंत्रालय के कक्ष में जो आप IDSA के प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग से जुड़े आप सभी आए हुए आगंतुक सज्जनों का, प्रतिनिधियों का, सबसे पहले तो मैं बहुत आप सबका अभिनंदन है। आपने मुझे बहुत कुछ जानकारी भी दिया है और मुझे लगता है कि ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो एसोसिएशन है, जिसका आपने लगभग 20-21 वित्तीय वर्ष की सर्वेक्षण रिपोर्ट जो अभी जारी हुआ, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों, एसोसिएशन के सभी सदस्य, कंपनियों एवं प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय, उससे जुड़े देश के लाखों उद्यमों को अपनी
शुभकामना भी मैं देना चाहूँगा आपके माध्यम से। प्रत्यक्ष बिक्री देश में तेज़ी से उभरता एक व्यापार है, उद्योग जगत के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो इसमें लाखों देशवासियों को स्वरोजगार का भी और जो स्टार्टअप शुरू करने का आजीविका और विशेष करके जो वैकल्पिक संसाधन अर्जित करने तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के मौके भी इससे उपलब्ध करा रहा है। जैसा कि बताया गया कि प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने कुछ वर्षों में अन्य देशों की तुलना में अपेक्षा सर्वाधिक विकास दर हासिल करते हुए और पूरे विश्व बाजार में अनेक देशों को हमने पीछे छोड़ करके अपनी पहचान स्थापित करने में हमने जो अपने रैंकिंग में भी जो सुधार किया है वो सचमुच प्रशंसनीय है। जैसे कि जानकारी मिली है आपके माध्यम से भी कि इस उद्योग में जो कुल प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग जो है आपका 300 करोड़ था, उससे बढ़ के 18,000 करोड़ हुए और इस उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला। प्रत्यक्ष विक्रेताओं की संख्या भी आज देश भर में 80 लाख से भी ऊपर जा रहा है और जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है। हम कह सकते हैं कि लगभग 47% या ना कि 50% के करीब महिलाएं हैं उसमें ज़्यादा भाग ले रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विश्व वरीयता क्रम में विश्व में जो सुधार की यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और यह जारी रहेगी आगे भी। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग वर्ष 2020-21 के जो आज जारी आंकड़े जो इसमें निर्देशित किया गया है, आपने जो बेहतर तस्वीर इसमें प्रस्तुत की है, इसका श्रेय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और IDSA को जाता है पूरी तरह से। हम सभी जानते हैं कि लगभग 2 वर्षों में कोरोना के इस वैश्विक महामारी में और इसके कारण देश की जहां अर्थव्यवस्था पर काफ़ी संकट सी स्थिति पैदा हो गई थी। ये ठीक है कि दुनिया के कई देश जो विकसित देश को पार करके और देश की आर्थिक व्यवस्था को हम प्रगति पथ पर पुनः अग्रसर करने में सफल हो रहे हैं। मैं विशेषकर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेवारी कुछ महीनों से संभाल रहा हूँ और उससे जो प्रत्यक्ष बिक्री के देश की अर्थव्यवस्था के जो विकास है तथा रोजगार और कौशल प्रदान करने में जो किए जा रहे आप सबका योगदान है उसकी भी सराहना करता हूँ। ये निश्चित रूप से IDSA का जिस प्रकार का इस प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आने वाले वर्षों बाद, जैसा कि मुझे अनुमान है कि 2030 तक आपने जो चर्चा किया, 2030 तक हम इसको 50,000 करोड़, आप सोच सकते हैं 300 करोड़ से आपने शुभारंभ किया, आज 18,000 करोड़ पर है और अगले 2030 तक आप 50,000 करोड़ भी पार कर सकते हैं। ऐसा लक्ष्य और इस प्रकार की जो
चारों तरफ वातावरण है, हम उससे इस बात को ध्यान में ला सकते हैं। और मंत्रालय का प्रयास है कि हम प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और इससे जुड़े जो उपभोक्ताओं के संरक्षण, हमारा मूल उद्देश्य क्या है। और आप जानते हैं कि उपभोक्ता आज के दिन बाल से लेके वृद्धावस्था तक, दुकान से लेके बड़े बड़े उद्योग जगत तक, फकीर रंग से लेकर के अमीर वर्गों तक, वो सब के सब उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। और मंत्रालय का पूरा प्रयास है कि हम प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और उससे जुड़े जो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जो अधिसूचित नियम है अभी अभी, और उसके जो दिशा निर्देश उनके नियम के द्वारा जो उठाए गए कदमों को अविलंब लागू किया जाए, ताकि हम उपभोक्ताओं के हितों का पूर्णतः संरक्षण कर पाएँ। यह हमारी प्रतिबद्धता है। और इस दिशा में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 का था, एक्ट, उसके तहत हमने हाल ही में 2021 के दिसंबर में कह सकते हैं कि इसको लागू करने की बात हमने किया है। और इस बदलते आर्थिक माहौल में उपभोक्ताओं और व्यवसायियों के बीच जो आपसी संबंध हैं, उन संबंधों का समुचित रूप से विनियमित करने तथा उपभोक्ता विवादों को भी सहज एवं समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। और एक्ट का जो हमारा जो एक्ट है उसमें इसको हमने दर्शाया है। और इस नियम में भी 2021 के जो हमारे नियमन बने हैं उसमें प्रत्यक्ष और उससे जुड़े हुए बिक्री उद्योग के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु प्रत्यक्ष बिक्री नियमन 2021 जो अधिसूचित हो गया है, ये आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के संरक्षण को भी बल प्रदान करेगा। और जो इस प्रकार के कुछ मुट्ठी भर लोग या संस्था कह सकते हैं जो उपभोक्ताओं को चीट करने का प्रयास करते हैं, हम उन पर भी लगाम लगा पाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मंत्रालय के इस प्रयास में जहां सार्थक इसको बनाने तथा मध्यस्थता से जुड़े प्रावधानों का अधिकाधिक जनमानस तक प्रचार एवं प्रसार करने में, इन बातों को समाज को पहुंचाने में IDSA जैसे संगठनों का बहुत बड़ी भूमिका है। और मेरी अपेक्षा है कि आप लोग जनमानस में, जन जन तक पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण और लोक अभियान, इसे एक अभियान के तौर पर आप संगठन के माध्यम से ले गए तो लोक कल्याण होगा, अंततः लोक कल्याण होगा, लोक सेवा। और मेरा विश्वास है और मुझे खुशी हो रही है कि बिहार जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ जिस धरती का मैं बरसों तक और अंत तक उसी बिहार में जन्मा हूँ, उस बिहार में ही हमारी सब कुछ विरासत रही है। तो बिहार जैसे राज्य में जो भारत में चौथा स्थान आपने इस प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग का चौथा स्थान बिहार, और बिहार जब किसी चीज़ को अपना लेता है तो पूरा देश उस बात को स्वीकार करता है। और मेरा विश्वास है चाहे अनादिकाल का उदाहरण लें, सतयुग का उदाहरण लें,
विष्णु भगवान भी इस धरती पर पहली बार अवतरित हुए थे तो वो धरती बिहार का था, और वह क्षेत्र जहाँ से मैं सेवक हूँ वो सिद्धाश्रम की भूमि बक्सर। भगवान राम जो दोबारा विष्णु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपना कर्म भूमि विश्वामित्र के सानिध्य में चुना, वो भूमि भी बिहार में, और वो सिद्धाश्रम का पुराना जो आज का वो नाम बक्सर है, जहाँ से मैं सेवक हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है जी। इसलिए बिहार को हम कह सकते हैं कि जो मैंने पहले कहा कि उस जमाने से लेके गौतम बुद्ध, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, महात्मा गांधी का कर्म भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऐसे जितने सरीखे लोग हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो 74 आंदोलन बिहार में क्रांति और पूरे देश में, जिसके बाद आपातकाल लगी और फिर देश में एक परिवर्तन हुआ, और हम कहते हैं कि देश में दूसरी आज़ादी 77 के बाद, 47 के बाद देश को दूसरी आज़ादी मिली थी, और उसका मैं प्रत्यक्ष हस्ताक्षर हूँ। जेल आपातकाल के दिनों का हर कष्ट को भी मैंने सहा है। जेलों की यातनाएं भी बहुत ज़बरदस्त मेरे ऊपर, वो जो यातनाएं वो भी मैंने झेला है। तो मुझे लगता है कि बिहार में और इस प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग का सिलसिला और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और बिहार मुझे लग रहा है कि जल्दी नंबर 1 पर आ जाएगा। और मुझे खुशी है कोविड के इस वैश्विक महामारी में, जहां हमने देश भर में, भारत सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हमने 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश भर में 2022 तक पूरे देश में सब सेंटर और हेल्थ सेंटर को वेलनेस सेंटर में बदलने का, जहां यह भारत का, हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां इतना बड़ा अभियान, जो आप जानते हैं कि ये पूरी तरह से जहां गांव के गरीबों को, ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार उनके जीवन यापन और उनके स्वस्थ रहने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। हाँ, यह जो हमारी भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और हमने, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत, है ना, भारत आयुष्मान हो, सचमुच ये गेम चेंजर का काम हो रहा है। देश के 10 लाख से भी ज़्यादा परिवार को, 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार और 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को, 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार और 50 करोड़ लोगों के लिए, जहां प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया उनके स्वास्थ्य की गारंटी की बात हम करके और उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जहां 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने 2022 तक हम खड़ा करने जा रहे हैं, वहीं आप जैसी संस्थाओं का IDSA के द्वारा जो वेलनेस उत्पादों में जो कुल बिक्री में आपकी जो भागीदारी है 58%, ये आने वाले दिनों में 100% आप इसको करने की सदिच्छा रखते होंगे। तो मेरा विश्वास है कि वेलनेस पर जो आपका विशेष रूप से, और हमें केवल एक वर्ग के लिए नहीं, अमीरों के लिए, हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है उसको भी हम इस बाजार के माध्यम से, गांव में रहने वाले गरीब लोग जो गांव में छोटे छोटे काम करते हैं, व्यवसाय के माध्यम से, कहीं ताड़ के पत्ते से डलिया बनाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत में हो, हर क्षेत्र में। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बराबर, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल,
हमें पूरे विश्व में छा जाना है। यह जो प्रधानमंत्री जी की सदिच्छा है, उनका जो सपना है, मुझे लगता है कि आप जैसी संस्थाओं के माध्यम से आपका सहयोग अपेक्षित है। और जहाँ तक मुझे बताया गया कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों की भी कुल बिक्री में भागीदारी आज 22% है। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग, जहाँ कोविड के कालखंड में सारे उद्योग में कमी आई, ह्रास हुआ, वहीं इस कोविड के कालखंड में आपने जो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को 7.7% की वृद्धि हुई, ये शुभ संकेत है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सब लोगों ने ये रिपोर्ट कार्ड आज जो प्रस्तुत किया है, मुझे खुशी है। स्टेट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया उत्कृष्ट होगा। जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, बार बार उनकी बातें हमें जीवन के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ, केंद्र बनता हर लोगों के लिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान बोधता, उठो जागो और लक्ष्य के को तक पहुँचे बिना विश्राम मत करो। मुझे लगता है कि IDSA स्वामी विवेकानंद की उस उक्ति को संपूर्ण समाज में, देश में और दुनिया में हम कैसे भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये प्रत्यक्ष बिक्री केंद्र के माध्यम से लोगों को उनके हितों की, जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनके हितों का कितना से ज़्यादा संरक्षण हो, इस बात का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़े। चले बेटी चले बेटी चले बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, sir. The direct selling industry remains thankful to your good office and to all the officials of the Department of Consumer Affairs for providing valuable guidance on all key issues concerning the industry. We are confident that with your support and cooperation, direct selling industry shall achieve new milestones and shall establish itself as one of the top 5 direct selling markets around the world. May I now request Mr. Vivek Katoj, Vice Chairman of the Indian Direct Selling Association, to bring today's event to a formal end by giving the vote of thanks. Shri Katoj has been instrumental in driving the industry forward and has been the face of the industry on various national and international platforms. Over to you, sir. यहाँ उपस्थित सभी गणमान्यों को मेरा नमस्कार। It's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. In keeping with the rich Indian tradition of Atithi Devo Bhava, I would like to take the opportunity on behalf of IDSA to express my deepest gratitude and thanks to Shri Ashwini Chaubey ji, MOS, Ministry of Consumer Affairs, Government of India, for sparing his valuable time from his busy schedule to grace this occasion to unveil the annual survey of IDSA for financial year 2021. I also would like to thank the senior officials from the ministry, Shri Rohit Singh ji, Madam Nidhi Khare, Shri Anupam Mishra ji, who always supporting this industry and bringing out the much needed legislation. It has been our endeavor that this study, which is a significant document, will provide vital insight into the direct selling sector's overall dynamics to all stakeholders, government officials, and all other concerned. I would like to emphasize that the direct selling has a bright future in the country. My appeal to all stakeholders is to harness this and propel the sector to greater heights, forgetting the darkness stint of the black swan. I'll conclude by saying, कठिनाइयों के निकलने के बाद ही सफलता की खुशी की अनुभूति होती है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, with this, we have come to an end of today's event. On behalf of the Indian Direct Selling Association and all our member companies, I once again thank you all for joining us live for today's session through various platforms.
IDSA is committed to make the direct selling ecosystem in India more conducive for the growth of the entities as well as to establish India amongst the top 5 direct selling nations around the world. All of you take good care of yourself as well as of the community. May all of us have a great year ahead. Thank you.